Bismillah Rahman Rahim. Welcome back, viewers, on JK Sports Time here in the inaugural match of Hokersar T20 Knockout Cricket Tournament between Team Hooked and Friends Motors Narbal. Hooked have scored 116 in the allotted overs. Ishtiaq Rasool sends the ball soaring over deep mid-wicket for a six. The first ball, and can you believe that? Ishtiaq Rasool not bothering to keep it down, just hitting it out of the crease and over deep mid-wicket boundary all the way for a six. Friends Motors Narbal have started with a bang. A sixer of the first ball. They're chasing 117. It can be a tricky total. Ishtiaq Rasool knows that on the back of his mind. Here is Abid Nabi. Comes in, bowls to Ishtiaq. Ishtiaq has thrashed it. It's in the air, but it's well beyond the reach of the fielder. A lucky escape. Ishtiaq Rasool would have his heart on in his mouth, but then luck favoring his path, and the ball falling behind the fielder there, who was trying to catch the ball, and as a result Ishtiaq Rasool gets a lucky escape. The score moves to 7 now. It was a loose shot played by Ishtiaq Rasool after hitting that very first ball out of the ground for a six. 7 for the loss of no wicket. And let me remind my viewers, they are chasing 117 to win from the allotted 20 overs. It should not be a problem for them, because Adil Rishi is the next batsman who is going to take strike up against Abid Nabi. Here is Abid Nabi, comes in, bowls to Ishtiaq. Adil Rishi, who swivels and pulls, but there is protection in the deep for that kind of shot. It went straight to him and the batsman take a single. Ishnag is batting on 7. He's a fiery customer. He spits venom when he gets going. He's back on strike. He's batting on 7 with the help of that gigantic 6 over mid-wicket. Wicketkeeper standing behind the stumps. Slip in the form of Mohsin Ramzan. Then there is a gully, a backward point, an extra cover, a mid-off and a long off. An extra cover and a mid-off inside the circle on the offside. On the onside we have a deep mid-wicket on the boundary and a long on the boundary. 7 on the off, 2 on the on. Here is Abid Nabi once more. Right arm over the wicket. Balls to Ishtiaq. Ishtiaq comes forward, but manages to hit it straight all along the ground. Using the feet, wanted to take the bowler on, coming down the track, but not getting it off the middle of the bat. Meanwhile, a single to Ishnag. He moves himself to 8. The total is 9 without loss. Abid Nabi this time bowling a fuller length delivery. Adil Rishi wanted to drive it back along the bowler, getting an inside edge. No harm done, no runs scored as well. Score stays at 9 without loss. Ishtiaq Rasool and Adil Rishi are the two batsmen who can just knock these runs off in no time. The next ball, a good length delivery outside the off stump. Adil Rishi going on to the back foot and guiding it straight to the fielder. And there cannot be any run. So after the completion of first over, the score is 9 without loss. The two umpires switching ends now. Umpire Advocate Hilal
And umpire Advocate Hilal officiating this match. He's a seasoned campaigner. He's known for his umpiring skills. Team Hooked have scored 117 in their allotted. In fact, they were bowled out for 117, not making it to the 20-over quota. And Jahangir. Gauhar has got the ball in his hands. Spin has been introduced, I think. Yeah, spin has been introduced. And they want to get rid of Ishtiaq Rasool. Good delivery. Ishtiaq Rasool trying to hit it, is beaten outside the off stump. Ishtiaq Rasool facing Gauhar. Once again, a leg spinning delivery. Leaving the right hander. Ishtiaq Rasool wanted to cut, is beaten outside the off stump. In the previous over, Ishnag wanted to come out of the crease, charging towards the bowler, and that brought a change in the form of a spin. They have introduced spin. They have set the field. A long on the boundary, a deep mid-wicket on the boundary. The next ball from Ishnag, that's hit furiously. Abid Nabi managing to stop that. Well, it was a bullet of a shot. Here is Gauhar. Right arm over, comes in, bowls to Ishtiaq Rasool. Ishtiaq Rasool is lucky. He's living dangerously. He wanted to hit it, got an inside edge on his bat and helps himself through with a single. That single takes the score to 10 now. 10 for no loss. Second over of their innings. Ishnag is batting here. Let me tell my viewers, he can be a dangerous customer. He is known for his brutal hitting. Adil Rishi, on the other hand, can look for ones and twos early on, and then can capitalize on that and explode. The two batsmen having two different kinds of nature. Ishnag and Adil Rishi. Adil Rishi cuts and cuts well and cuts beautifully past extra cover. No fielder could move on that, and the ball races away to the extra cover boundary for 4. First brilliant shot, first confident shot from Adil Rishi, helping himself to open his account with a boundary. As far as the boundaries is concerned, he had already opened his account with a couple. He is batting on 6. Ishtiaq Rasool is batting on 8. With the help of that 6 of the very first ball of Abid Nabi. Abid Nabi once again is going to bowl to Ishtiaq Rasool. Ishtiaq Rasool has got his fans all over the valley, outside the valley too. He is such kind of a talent, a highly rated talent. Here is Abid Nabi to Ishtiaq Rasool, bouncing short, rising outside the off stump. Ishtiaq Rasool is practicing the right kind of a shot now to ramp it over the fielder's head at the slips. Ishnag. Everyone, every spectator would be itching
to see a heroic innings from Ishnaq today. Abid Nabi is settling his field, has stationed a fielder at deep third man. Outside the crease coming Ishtiaq Rasool, wanted to hit it out of the ground, is beaten. Ishnaq, that's the kind of cricket he is known for. He will go for his shots from the word go. We are live on JK Sports Time from HMT Srinagar. It is Hokarsar T20 Knockout Cricket Tournament. Team Hooked are up against Team Friends Motors Narbal. Ishtiaq Rasool so far is looking out of touch. The total is 12 for the loss. The next ball, and Ishtiaq Rasool has thrashed it. What a shot that is. Stand and deliver. Seeing the opportunity, it was a short rising delivery, and Ishtiaq Rasool has slapped it. Slapped it and all the way over long on for a 6. That 6 is the second of his innings, and second off on the bowling of Abid Nabi. 18 without loss. Abid Nabi bowling a full length outside the off stump, and umpire waving his arms signalled a wide. That single takes the score to 19. Ishtiaq Rasool needs to settle down, needs to take those singles and twos, build some momentum and then explode. But he will not listen to us. He will play his natural game. Slower ball outside the off stump. Ishtiaq Rasool once again trying to play it out away from his body, misses, and the ball is gathered by the wicketkeeper behind the stumps. 21 without loss. The third over of the innings. Abid Nabi is bowling to Ishnaq. Here is Abid Nabi. Bowls to Ishtiaq Rasool. Ishtiaq Rasool coming out of the crease. Got an inside edge. The ball is trickling away towards the fine leg boundary and crosses the fence now. 4 more runs. Although it was not a shot intended by Ishtiaq Rasool, he wanted to send it over long on. The ball getting an inside half of the bat and trickling away to the fine leg boundary for 4. That 4 takes the score to 25 now. 25 after the completion of 3 overs. Ishtiaq Rasool is batting on 18 with the help of 2 sixes and a boundary. Adil Rishi is batting on 6 with the help of a crisp boundary. And the total is 26 for the loss of no wicket, chasing 117. And to tell you more, for the next 3 overs, it's over to my friend Nasir. शुक्रिया इरशाद साहब। 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। टीम का स्कोर 25 रन। याद दिलाऊं 117 रन का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए फ्रेंड्स मोटर्स को। इश्तियाक नाग इस बार ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से खिलाड़ी गेंद के पीछे आ रहे हैं। देखना है रोक पाएंगे या नहीं। गेंद को रोककर थ्रो किया जाए। विकेट कीपर के पास 1 रन लेने का समय था। 1 रन हासिल किया है इश्तियाक नाग ने। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 26 रन। अब सामना करेंगे आदिल रशी। आदिल रशी खामोश दर्शक की तरह उन्होंने साथ दिया है। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए।
मिडिल और लेग स्टंप के आसपास की गेंद थी, स्पिन का प्रयोग किया था शुरू से ही टीम हुक के कप्तान ने। इस बार मौका ताड़ा इश्तियाक रसूल ने, लगातार तीसरा छक्का। इश्तियाक रसूल इससे पहले 2 छक्के लगा चुके हैं आबिद नबी के विरुद्ध, इस बार तीसरा छक्का। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 118 रन का 117 रन का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए फ्रेंड्स मोटर्स को। गौहर सामना करेंगे इश्तियाक नाग, इस बार ऑप्शन से बाहर, बैक पर गए, गेंद को कट किया लेकिन गेंद गई गली क्षेत्र के आसपास जहां फील्ड कर रहे हैं जाहिद डार। गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, रन लेने की कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार मिडल और लेग स्टंप के आसपास सम्मान दिया, गेंद को खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड किया जाए, रन की कोई गुंजाइश नहीं। गौहर पहला ओवर काफी किफायती उन्होंने किया, लेकिन इस ओवर में दिशा से भटके। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ, अंदरूनी सिरा लगा, मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद गई। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, विकेट कीपर के पास चहलकदमी करते हुए रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं इश्तियाक नाग। अब सामना करेंगे आदिल रशी। आदिल रशी सामना करेंगे गौहर की अगली गेंद का। गौहर तिरछे रन अप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, मुश्किलन 2-3 कदम का तिरछा रन अप। इस बार लेग स्टंप से बाहर गिरने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकली। हल्का सा सवाल है एलबीडब्ल्यू का, अंपायर टच से मस नहीं हुए, लेग बाइज के रूप में 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ इस ओवर का खेल समाप्त। $117 रन का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। टीम का स्कोर 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज यहां टॉस जीतकर फ्रांस के कप्तान आदिल रशी ने फील्डिंग करने का फैसला किया। शुरुआत अच्छी रही फ्रांस की अगर बात की जाए, लगातार जो टॉप ऑर्डर है उसको ध्वस्त किया आदिल रशी और इश्तियाक नाग ने। अगर बॉलिंग में कोई कसर रही होगी, उस रही से ही कसर को यहां पूरा कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से इश्तियाक नाग और आदिल रशी। गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरे गेंदबाज का उपयोग किया गया है। आदिल पोलार्ड गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे आदिल रशी। ऑफ साइड में अगर देखा जाए तो घना कार्डन लगाया गया है कि परिंदा पर भी मार न सके। पोलार्ड की यह गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप के आसपास, बैक पर गए, बल्ले का सिर्फ मुंह खोला, गेंद को धकेला ऑन ड्राइव के अंदाज में। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए लॉन्ग ऑन क्षेत्र से जहां फील्डिंग कर रहे हैं आबिद नबी। 1 रन लेने का समय था, 1 रन हासिल किया आदिल रशी ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ अब सामना करेंगे इश्तियाक नाग। स्कोर 35। आदिल रशी सामना करेंगे आदिल पोलार्ड का। आदिल पोलार्ड ओवर द स्टंप्स, रशी को ऑप्शन से बाहर, बैक पर गए, गेंद को खेला कवर क्षेत्र की ओर, हल्का सा मिसफील्ड, रन लेना चाहते थे आदिल रशी लेकिन साफ मना किया है इश्तियाक नाग ने। 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पर आतशी बल्लेबाजी देखने को मिली इश्तियाक नाग के बल्ले से। आदिल पोलार्ड को एक गेंद ऑप्शन से बाहर, मौका ताड़ा, गेंद को निकाल दिया कवर फील्डर के बाएं जानिब से, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद की सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रफ्तार पकड़ ली है स्कोर ने, आतशी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इश्तियाक रसूल के बल्ले से। आदिल पोलार्ड काफी खफा, क्योंकि सोचते थे कि शायद इस गेंद को रोका जाए, लेकिन स्ट्रोक की रफ्तार इस कदर तेज थी कि खिलाड़ी महज दर्शक बन के रह गए। इस बार शॉट, गेंद को फिर से खेला, गेंद की मिड विकेट क्षेत्र की तरफ जहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, चहलकदमी करते हुए रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं इश्तियाक रसूल। राहत की सांस ली होगी आदिल पोलार्ड ने, लेकिन यहां अब सामना करेंगे आदिल रशी। आदिल रशी
इस बार बढ़िया गेंद, सम्मान दिया, फ्रंट पर आए, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लगने दिया, गेंद फील्ड हुई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी कुल मिलाकर 117 रन का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, उससे भी बेहतर स्ट्रोक, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 44 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर का खेल समाप्त। साहिल मीर हमें देख रहे हैं, ये भी एक ऐसा सितारा है रहमान कप क्रिकेट टूर्नामेंट, रनर अप टीम जो थी एफसीसी छानपुरा, कप्तान हैं साहिल मीर उस टीम के। शाहनवाज डार, नदीम नजीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल पोलार्ड काफी महंगा ओवर हुक्कड़ की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। इश्तियाक नाग सामना करेंगे अब गौहर का। टीम का स्कोर 44 रन। छठे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर से बाहरी सरा लगा, स्लिप कॉर्डन के ऊपर से गेंद गई, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद की रफ्तार कुछ ज्यादा है, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि प्रयास किया था जाहिद डार ने गेंद को रोकने का, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 48 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 5.1 ओवर का खेल हुआ है। छठे ओवर का खेल जारी। लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए 117 रन का। इस बार गेंद को खेला, गेंद गई दूर, उस ओर वहां कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इश्तियाक नाग, एक तो उन्होंने गेंदबाजी ऐसी की, बैट पे लाके खड़ा किया था उन्होंने टीम हुक्कड़ को। पहले ही जब उन्होंने 2 ओवर किए थे, टॉप ऑर्डर को उन्होंने दुरुस्त किया। अब जाके अगर वहां कोई कमी रही होगी उसकी उन्होंने भरपाई की अपनी बल्लेबाजी से। आतशी बल्लेबाजी, लगातार ये चौथा छक्का इश्तियाक नाग के बल्ले से। एक बार फिर से ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं। एक अवसर बन सकता है कैच लपकने का, लेकिन कैच को लपक न सके। इस तरह से 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं इश्तियाक नाग। सामना करेंगे अब आदिल रशी गौहर की अगली गेंद का। गौहर ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, 13 रन अप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गौहर। सामने है आदिल रशी। आदिल रशी ऑफसाइड में फैलाई हुई फील्ड, इस बार लेग स्टंप के आसपास गिरने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकली। अंपायर का इशारा आ रहा है वाइड का। अतिरिक्त के खाते में 1 रन, टीम के खाते में 1 रन। हेडलाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं आदिल रशी को। डाउन द ट्रैक खेलना पसंद करते हैं, शायद यही कारण है क्योंकि खफा है विकेट कीपर से गौहर। सोचते थे कि एक अवसर बना था स्टंप आउट करने का, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार फिर से पैड लाइन पे, रॉन्ग लाइन पे गेंद कर रहे हैं गौहर। खामियाजा भुगतना पड़ा एक्स्ट्रास के रूप में 1 और रन। छोटा सा लक्ष्य, केवल 117 रन का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए फ्रेंड्स मोटर्स को। इस बार पैड लाइन के आसपास गेंद को उठा दिया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। एक आसान सा कैच लपक लिया आबिद नबी ने। इस तरह से निराश और हताश होते हुए आदिल रशी वापस जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ। फ्रेंड्स मोटर्स को लगने वाला ये पहला झटका। इश्तियाक नाग एक उम्मीद बन के, हालांकि अभी भी क्रीज पे मौजूद आदिल रशी अपनी कीमती विकेट गवा बैठे। फ्रेंड्स को लगने वाला ये पहला झटका। लाइन के आसपास गेंदबाजी कर रहे थे, क्रैम्प किया, हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। एक लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हालांकि स्ट्रोक की टाइमिंग तो उस कदर ठीक नहीं बैठी। वहां ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात थे आबिद नबी, उन्होंने एक आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह से आदिल रशी की पारी का अंत किया। इश्तियाक रसूल अभी भी मौजूद। एक 117 रन का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए फ्रेंड्स मोटर्स को। मोहसिन रमजान, आदिल पोलार्ड, जाहिद डार,
आबिद नबी सितारों से सजी हुई टीम थी हुकड़ की, लेकिन यहाँ ताश के पत्तों की तरह बैटिंग लाइन बिखर गई हुकड़ की। केवल 116 रन बनाए उन्होंने, पूरी तरह से बैट पे लाके खड़ा किया था फ्रेंड्स मोटर्स ने। अब जाके 117 रन का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए फ्रेंड्स मोटर्स को। आतशी बल्लेबाजी इश्तियाक नाग के दौरा। उजैब इस बार पैड पर लगी जबरदस्त अपील, लेकिन लेग स्टंप से बाहर गेंद पिच हुई। शायद यही कारण है अंपायर ने इस अपील को साफ नकारा है। गौहर, अक्सर बेशतर मैं इस बात को दोहराता हूं, T20 गेम ही ऐसी है, यहां आपको रफ्तार से ज्यादा वेरिएशन चाहिए, तब जाके आप बच पाओगे, और वही वेरिएशन देखने को मिल रही है। इस बार फिर से गेंद पैड पर लगी, अंपायर ने साफ नकारा। डॉट गेंद के साथ इस ओवर का खेल समाप्त। अब तक एक इकलौता विकेट जो गंवाया है फ्रेंड्स मोटर्स ने, वो इसी ओवर में वो सफलता मिली है। गौहर को आदिल रशी की उन्होंने कीमती विकेट हासिल की थी। छठे ओवर का खेल समाप्त। टीम का स्कोर 57 रन। अभी भी जीत के लिए 60 रनों की और जरूरत। छठे ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 7वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। यहां बॉलिंग में परिवर्तन किया है हुकड़ के कप्तान, और यहां कमेंट्री में परिवर्तन होगा। आगे का विवरण देंगे मेरे साथी कमेंटेटर इरशाद भाई। Thank you, Nasir. 6 overs done, so the power play is done, and Friends Motors have managed to score 57 for the loss of wicket of Adil Rishi. Ishtiaq Rasool is going great guns blazing. He's hit some mighty strokes. The next one cuts away straight to the fielder, sweeping at the extra cover boundary, who slides to field, and the batsmen take only a single. That single takes Ishtiaq Rasool to 27. He's batting on 27. Here is Adil to Huzab. Huzab comes forward and plays it defensively back along the track. Adil Pollard fails, and there cannot be any run. Adil once again comes in, bowls to Huzab, and Huzab is beaten outside the off stump. Huzab is not picking the spin off on. He wanted to pull, and that ball leaving him outside the off stump. Fortunate for him that he did not get a touch. 58 for the loss of 1 wicket. Adil bowls to the batsman, who gets an outside edge and gets the gap too, and the ball crosses away to the third man boundary for 4. That was not a convincing stroke, but 2020 cricket needs such kind of strokes. Outside the off stump, splitting the gap, and the ball crossing over to the boundary for 4. That 4 takes the score to 62 now. Adil bowls to Huzab. Huzab comes forward, defends. Score remains at 62 for the loss of 1 wicket. Walaikum assalam. He is someone watching us from UAE. Outside the off stump, Adil bowls his overs very quickly. One more dot delivery, ends his over, ends the 7th, and the score is 63. 63 for the loss of 1 wicket. The batsman dismissed, Adil Rishi, against the run of play. He was batting decently, trying to loft one out of the ground,
managed to hit it down the throat of Abid Nabi at long on. The two umpires of the match, the umpire Adil, and we have the seasoned campaigner as per the umpiring is concerned. Meanwhile, the next ball has been launched out of the ground, over deep mid-wicket and all the way for a 6. Ishnaq can do nothing wrong today. He has taken the bowling attack on. The spinner has been hit for a couple of 6s. Ishtiaq Rasool hits them, and when he hits them, they stay the hit. He hits them big outside the off-stump once again. He comes out of the crease. This is in the air, and the fielder losing the sight of the ball, and the ball trickling away to the boundary. I think the batsmen are coming back for the second. We'll wait for the umpire signal. And the umpire has signaled 2 runs, yes. That was in the air for quite some time. The fielder settling under it. I think he lost the sight of the ball due to sun. The next ball, Ishtiaq Rasool reverse sweeping it down towards deep extra cover, and the batsmen take a single. Ishtiaq Rasool has completed his 50 with that stroke. He's batting on 51 now. What an innings this man has played. Fast, furious and brutal, to say the least. The next ball swept and swept hard. This time Huzab joining the party, and the ball crosses over the boundary for 4 runs at deep mid-wicket. No chance for the fielder there. It was hit very furiously. The bowler Gauhar straying down on the pads, and Huzab down on one knee, sweeping it hard. Ishtiaq Rasool is batting on 51. Huzab, the next ball once again sweeps and sweeps well, and sweeps all the way for 6. What a shot that one. Not trying to keep it down, sweeping it deliberately well over the fielder's head at the fine leg, and the ball crossing over to the fine leg boundary for a 6. It's raining 4s and 6s here. The score. Next ball from Gauhar, respectably played by Huzaf. That marks the end of a costly over. The score has galloped to 81 after the completion of 8 overs. 81 for 1, and Ishtiaq Rasool looks in hurry. So is Huzab. Ishtiaq is batting on 51. He has faced 18 balls for his 51. He has hit a couple of boundaries, and he has hit 5 6s in his knock of 51. That is the kind of innings which was needed from him, and he has obliged. What an innings from Ishtiaq Rasool. The crowd has built in numbers here. They're watching each and every shot of this man. When he hits them very big. Adil comes in, balls to Ishtiaq. Ishtiaq makes room. Then the bowler follows him, and the batsman plays it defensively back along the track. 81 after the completion of 8 overs. This is the 9th over of their innings. Here is Adil. Balls to Ishtiaq, and Ishtiaq has slapped it. And he has slapped it all the way over the deep mid-off boundary for a 6. Adil bowling a half-tracker, and Ishtiaq Rasool needs no second invitation. He was up to it in a hurry, making room and thrashing it over the fielder's head down towards deep mid-off boundary for a 6. The 5th of his innings. He is batting on 57. The score now moves to 87, and everyone is going in the middle to look at his bat. It is not a bat, it is a sword.
When the ball comes out of the middle of this bat, it goes very far. I think the ball has been lost there because it was hit very furiously by Ishnag. Ishtiaq Rasool has entertained one and all, everyone standing here. Nobody has moved an inch. They're watching the heroics with the bat, and with the bat of none other than the mighty Ishnag. It is a one-sided match so far. The icing looks on the cake now. Team Hooked looks down and out, and France Motors Narbal are well on course to register their first victory and qualify for the other round. Ishtiaq Rasool first with the ball and now with the bat. Next ball thrashed off the back foot and cut away. What a shot that is! 4 more runs. The fielder having no chance to stop that ball, and the ball crosses the backward point boundary for 4. That boundary takes the score now to 91. Once again, Ishtiaq Rasool comes out of the crease and slaps it once more over mid-off, on its way to the boundary for a 6. 6, 4, and then 6. Ishtiaq Rasool. Well, what have you done to this match? Ishnag, you have made this a one-sided encounter. Hokersar T20 Knockout Cricket Championship. And we are live on JK Sports Time from HMT Ground in Srinagar. The next ball, Ishtiaq Rasool misses it, but the keeper misses it too, and the ball has gone to the third man boundary for 4. 4 byes and 4 more runs to the total. Means the 100 is up now, 101 for the loss of 1 wicket. And this is only the 8th over of their innings. 9th over of their innings, beg your pardon. And it is a one-sided match. It's a brute of an innings. He has murdered the bowlers. Ishtiaq Rasool. Remember the name, Ishtiaq Rasool, who slaps it and gets it once again to the boundary. This time in front of square leg boundary for 4. Ishtiaq Rasool has made this match a one-sided, no affair at all, a no contest at all. First with the ball, wreaking havoc and demolishing the top order of Team Hooked, and now with the batting, he has made it look all easy. 12 more runs needed for the victory, 11 overs remaining. Ishtiaq Rasool is batting on 70 odd runs, and he has taken every bowler to the cleaners. It's a formality now for Friends Cricket Club Narbal. The next ball, and Huzab joins the party too, and he has launched it over deep mid-wicket all the way into the boundary for a 6. Friends Cricket Club Narbal, Friends Motors Cricket Club Narbal have made this chase look an ordinary one. Huzaf, this is the second 6 of Huzaf, outside the off stump, wide. The score reduces now to only 5 runs. They need 5 to win. 11 overs or so remaining in this match. What a performance, clinical performance, brute of a performance. The next ball cuts away straight to the fielder at extra cover. Batsmen take a single. 4 needed now, and Ishtiaq Rasool has got the license.
to hit the winning shot. Ishtiaq Rasool batting on 70. 113 for 1. Ishtiaq Rasool slaps it back past the bowler, and the fielder stops it. Ishtiaq Rasool refuses a single. He wants to hit a winning shot. He wants to send this ball and send it soaring out of the ground. Let's wait and watch. Here is Asif. Right arm over the wicket. Tosses this one up. Ishtiaq Rasool making room. Not seeing the opportunity to hit this one out of the ground. Stops his bat and plays it defensively. 113 for 1 in only the 9th over. The next ball outside edge. The ball is flying away, and that will be it. What a clinical performance. What a knock played by Ishnag. He batted very well, and let me remind my viewers here, he bowled exceptionally well, and what an all-round performance by Ishtiaq Rasool. And Huzaf hitting some lusty blows too, and that means Team Hooked has been demolished, and Team Hooked has lost this match in only the 9th over. Friends Cricket Club, Friends Motors Narbal winning this match with a margin of 9 wickets, and inside the only 9th over, the hero of the match, Ishtiaq Rasool, and is walking to a standing ovation. What an innings this man has played. A terrific knock, and he has made the bowling of Team Hooked Srinagar look very ordinary with his shots, with the kind of shots he played. He played brilliantly. He played exceptional shots. And let me give you a recap of the innings of this match. It was the inaugural match of Hokersar T20 cricket tournament here in HMT, and it was Team Hooked Srinagar against Friends Motors Narbal. Friends Motors Narbal winning the toss this morning, putting Team Hooked Srinagar to bat, and Team Hooked Srinagar was bowled out for a paltry 117 in their allotted 20 overs, and as a result they had set a target of 117 to Friends Motors Narbal to win this inaugural match and proceed into this next round. And then, who knew, Ishtiaq Rasool had other ideas. He demolished the bowling lineup of the opposition team, that's Team Hooked, and stormed his way to a 20 ball 76 not out, and that meant it that Team Friends Motors Narbal won the inaugural match of Hokersar T20 knockout cricket tournament here at HMT ground by 9 wickets. The hero of the match was Ishtiaq Rasool with a 20 ball 75, and he took 3 wickets in his allotted 4 overs. And with that, we from JK Sports Time wish you best of luck and take you back to the studios. Thank you. Allah Hafiz.